Hello, welcome. Speakeasy with me, Anoushey, and some drilling happening on top. कुछ ड्रिलिंग भी हो रही है. यहाँ पे तो ड्रिलिंग नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ कॉन्वर्सेशंस होते हैं. आज मेरे पास I have a very dear guest. She has been through enough. She's come out a winner. We all have our struggles, but the ability to heal people, ability to help people, बहुत कम लोगों में होती है. And the ability to make you understand how to make your life a little more acceptable, and be a little more manageable. Theta healing करती हैं, all rounder. I think she's a healer. She has so much. She's an author, and more than anything else, she's a dear friend as well. And I thought today we'd have her over and we talk a little about grief, a little about sadness, a little about looking into the future, and a little about helping ourselves in really uncertain times. बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं और हम अपनी मदद, खुद की मदद कम करते हैं और दूसरों की ज़्यादा करते हैं, which is fine too, लेकिन अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है. Mariam Virani, Ajmal, hello. Hello, how are you? What's Good, happening? how are you? I'm doing good today. जी, आज ड्रिलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है ऊपर छत पर. I think ये सबके घर में ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं कराची में. ये पाकिस्तान का मसला है. पाकिस्तान का माहौल है. पाकिस्तान का माहौल ही है वैसे वाकई में. ड्रिलिंग, बिल्डिंग, ठक ठक ठुक ठुक, कुछ ना कुछ चलते रह रहा है. क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. Excited to do this podcast today. Yes. I really want to start talking about energy healing and how everybody can kind of jump on this bandwagon and avail the best from it for themselves. एनर्जी हीलिंग के बारे में अब हम लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं. I think there was a time when we didn't know so much about energy healing. Okay, एनर्जी हीलिंग क्या होती है और किस तरीके से होती है. तो if we just do a quick understanding for in layman terms, कि what is energy healing? देखिए, first off, if you start seeing everything as energy, that everything has a vibration, like your body has a certain vibration. Right. It can be you can monitor it on a device and see that you have a certain vibration. Every object in the room has a certain vibration. So if you start seeing things as forms of energy, you can also see that energy is a flow that comes in and out of the body and needs to be in balance. Like a sending signals out and receiving as well. So when you start seeing things in that way, you realize that the human body can pretty much heal itself. And when you understand these things better, you know exactly how to do it. There's so many energy healing modalities out there and so many tools you can use from. Any one of them that you learn will help you manifold, throughout your life is going to help you out a lot. Right. Talking about the body's ability to heal itself, इसमें मैंने काफ़ी documentaries भी देखी हैं. I've read a lot about it. But again, implementing how does my body heal itself? Ultimately, we are all taking pills. We all have a lot of anxiety, depression as well. And वो हमारे अंदर भी, it causes issues with the gut, issues with the heart, issues with so many other things. What does it mean when you say कि Anoushey, the body has the ability to heal itself? Do I think कि मैं heal हो रही हूँ, मैं heal हो जाऊँगी? क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि every morning you wake up and you say मैं ठीक हूँ, and लोगों का कैंसर क्यों हो गया? And I'm like, I don't know if that is, Well, you can kind of relate that to the placebo effect, right? And see how that works on people. But that's just a very small part of everything. There's so many other elements at play. The reason I believe the body can heal itself is the earliest quote that I had read a decade ago of Hazrat Ali ibn Abi Talib's, which was that your sickness is from within you and your remedy is also within you. And I really believed in all his quotes and I used to go by them and stuff. So I said, इसमें कोई कुछ तो है. Let me figure out क्या है. And when I threw that question out into the universe कि मुझे पता करना है इसमें क्या है, eventually through life the answers started coming to me. So I can tell you from a Theta healing perspective. Yeah. Theta healing है एक modality जिसमें हम देखते हैं कि belief systems जो हैं हमारे अंदर, जैसे let's say as Pakistanis we as not even as Pakistanis, as people we believe that life is not easy. हाँ. अब ये एक belief है आपके अंदर कि life is not easy, तो आपकी life easy नहीं होगी.
कोई कोई लोग होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ईजी होती है, यू नो, यू काइंड ऑफ सी दिस पीपल, यू कैन सी देम एज अ कैरेक्टर इन अ फिल्म, और यू काइंड ऑफ। अब्बा को माशाल्लाह हमेशा देखती हूँ, जितनी भी इनकी तकलीफ हो वो रात में आराम से सो जाते हैं, मतलब आपकी इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? और बहुत बहुत चिल होके, राइट। कोई कोई लोग होते हैं जिनको इंसोम्निया है, कोई है कि जो 1 मिनट में जाके सो जाते हैं, यू जस्ट लाइक ये कैसे हो रहा है आपके साथ, मुझे नहीं समझ आ रही चीज़। सो जो आपके अंदर बिलीफ सिस्टम्स हैं जो पैदाइश से हैं, इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन, द बिलीफ सिस्टम्स दैट यू आर पिकिंग अप ऑन फ्रॉम योर पेरेंट्स, दैट आर इन योर DNA, passed through genetics, that you learn over time. From the age 0 to 7 you acquire all your beliefs. So in that 0 to 7 बड़ी ही deeply entrenched है। हाँ, तो 0 to 7 आप जब देख रहे हैं चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू जा रहे हैं, और वो एक एक्सपीरियंस में आप अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं, अच्छा ये जो है चीज़ ये ऐसी ही है। हाँ, रात को सोएंगे तो मुझे डर लगेगा, मुझे जिन आके तंग करेंगे, वो चीज़ फिर आपके साथ होगी, आपको रात में नजर आएंगे, धक्का भी पड़ेगा, बट नाउ इट्स engraved in your belief system that it's there. So what you have created this monster to a certain extent yourself? Yes, and it's not like, oh my god, I'm doing this to myself on purpose. There are also great beliefs that people have, like you know, like in unity and working together, and if I work with people, if I share, there'll be more, and multiplication and generosity, and like stuff like that is also there. I'm not saying it's all bad stuff, but what Theta healing does is that Theta is a brainwave. You have there are 4 brainwaves. 4 levels? 4 levels. Beta is when I am speaking to you, this active level of like conversation and baatein kar rahe hain, this is beta. Alpha is a creative space, you know, when you're kind of painting or you're writing something and you're in that space of creation, or even Reiki is done through alpha waves. Or is that calm, is that calm relaxed state. Delta is when you're asleep. थीटा जो है वो है बीटा और डेल्टा के बीच में स्टेज, एक बहुत ही डीप मेडिटेटिव स्टेज। यू आर इन थीटा एज सून एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग। Okay. So in that, automatically in theta, because you know you haven't completely woken up, you haven't started talking to anyone, so you've just woken up, you've come out of delta and you're in theta. So that's why people also say that this is a great time for affirmations and setting an intention for the day. कि हाँ आज मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, आज मेरी सेहत बेहतर होगी, और फिर होती है जी, आज होगी, एंड दैट विल शो अप थ्रू योर डे। एक दफ़ा बोल के आपने छोड़ दिया उसको, यू डोंट टॉगल विद इट, यू डोंट गो लाइक नहीं हुआ अभी तक, एट द एंड ऑफ द डे यू काइंड ऑफ नोटिस, you know, 5 मिनट हो गए नहीं हुआ अभी तक, you know, like kind of thing. ये दिन बेहतर हो ही नहीं रहा। So you reprogram the belief system in this state. So your healer knows how to achieve this state for you and maintain it for you. And this is when they send the reprogramming positive beliefs and retake out the core beliefs that are shaping your current reality. So they get into your subconscious, because वो चीज़ें तो हमारे अंदर इतनी ingrained है कि कहने से नहीं जाएंगी। जी बिल्कुल। मैं ये बिलीव नहीं कर रही, वो डर जो है, जो एंग्जाइटीज़ हैं, जिस चीज़ की वो तो आते रहेंगी रोज़। Having said that, we can't do theta or theta on ourselves. If you are a healer and you've learned the modality, yes you can. I practice on myself. It's very difficult to practice on yourself because you are your own block. Because you know, like is hafte I have been struggling and I'm like, oh, I should reach out to another healer. And the reason I'm doing that is because मैं अपने आप को ही time नहीं दे पा रही हूँ. I'm not being able to get over my level of anxiety or whatever it is that's going on in my life. It's very difficult for me to stop, pause, sit in a corner by myself in silence. To achieve that it's a mission, like, you know, no matter what your journey is. It's just a mission, it's also like we are all human at the end of the day. So I think everybody needs another person and a support sort of to help them feel definitely. How often does one need this kind of healing? Does it depend on their state of mind, or as many times as possible, या उसका कोई routine होता है theta healing का? So it's not like therapy कि आप हर हफ्ते आपकी appointment है और आप जा रहे हैं. The way it works is some people come to me once in 6 months, once in a year. They come get their fix and they're reset okay, थोड़े अच्छे zone में okay, zen mode में जाके they go, you know, kind of go forward with their life. But people who have chronic cases, like I've had someone with a chronic back pain, I've had someone with chronic anxiety come to me, and what they do is they come for maybe 3 sessions, 5 sessions, and then they're on their way. वो जो चीज़ heal हो जाती है and then they're like, okay, we're done here. Because वो एक चीज़ होती है उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे कुछ
50 बिलीफ सिस्टम जो हैं उसमें इनग्रेन हुए हुए होते हैं, वो एक मोमेंट में, वो एक ट्रॉमा में जो उनकी बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है. You have a difficult relationship with your mother-in-law, your husband, your siblings. अब वो चीज़ें तो बदल नहीं सकती. But if I change the narrative in my head कि आज मैं अपनी सास के साथ या आज मैं अपने शौहर के साथ मेरा आज उनके साथ दिन बेहतर गुजरेगा, चलो. तो you really think if I take on some healing, practice it generally, make that affirmation in the morning, things will get better with them. There is a way to maneuver around your relationships because that is one of the biggest causes of stress for every individual. कि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में होता है जो आपको ट्रिगर करता है या एक न्यूसेंस वैल्यू होता है आपके लिए, you know. वो तो हम सबके पास लोग हैं जिनको हमने ही असाइन किया हुआ है कि आप मुझे तंग करना तो फिर मेरा रिएक्शन होगा. सो व्हेन यू आर अ हीलर यू आर ऑटोमेटिकली लाइक यू आर वर्किंग ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, यू आर वर्किंग विथ बिलीविंग दैट गॉड, अ क्रिएटर, अ हायर सोर्स इज द वन हु डज द हीलिंग, नॉट मी. I am a facilitator is what I believe. Healing अल्लाह की तरफ से आ रही है आपके पास, और आपके और अल्लाह के बीच में मैं बस हेल्प कर रही हूँ आपको कनेक्ट करने में अल्लाह से. सो जब आप इस पाथ से जा रहे होते हैं तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है कि जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं वो आपको एक आईना दिखा रहे हैं, आपको रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है, आपको किस चीज़ पे तवज्जो देनी है, आपको किस चीज़ के बारे में सोचना है, उनमें ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, उन्होंने क्या किया वो चीज़. अब आप थोड़ी देर जाके take yourself out of the situation and just think, why did I get angry at the situation? Why did it bother me so much? It's not about the person as much as about of what's going on inside of you that they're highlighting for you. Right. Well, I mean, it's definitely easier said than done. It's not easy to obviously go through it, but it's a process. Abusive or toxic जिसे हम कहते हैं, और एक चीज़ चले जा रही है, लाइक हाँ ठीक है मैं आई विल नॉट लेट इट गेट टू मी. लेकिन एक टाइम आता है जहाँ पे आप कहते हैं मैं अपना सर जाके कहाँ मारूँ, यू नो. एक और चीज़ होती है सेल्फ प्रिजर्वेशन. अगर आपसे वो ट्रिगर हैंडल नहीं हो रहा है और आपको नज़र आ रही है कि ये इंसान जो है मेरे लिए अभी अच्छा नहीं है, मुझे बहुत बॉदर कर रहा है इंसान, मैं नहीं मैनेज कर सकती हूँ इसको अभी. सो इट्स essential to take space from that. It's essential to set a boundary and be like, no, either you respect my boundaries and I'm telling you to stop here, and if you can't respect it, I'm sorry, we need to take some space from one another till we can be friends again, till we can have a relationship again and cordially behave again. हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है to come through कि बड़ों से आप कभी, मैं ये नहीं करी कि बदतमीजी करें, never be mean or downright बदतमीज with your elders. But you do have the right to create your own boundaries. But somehow we are emotionally blackmailed then by saying that we are being badtameez, or we are just being difficult, or we are being nasty, or you know we're getting too emotional if we decide to take our space from certain people who might not be bringing out the best in us. And that is something to again where I think healers come into play to a certain extent because they help you maneuver that difficulty as well. You have to be very deep in our society. Especially a woman has to be very deep. I think deep is such a bad word, but it depends from it. It's honestly an individual thing. So when I have a client come to me and they might have the exact same problem as another client, but जो root उसका है, जो core है, जो origin of the problem उनके अंदर जहाँ से शुरू हुआ है is always unique and different from another person. सो जब ऐसी थेटा हीलिंग की बात आती है तो वो तो इंडिविजुअल से ही काम करता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए. लेकिन जो कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं वो बाउंड्रीज आर नॉट नेसेसरली समथिंग दैट नीड्स टू बी डन आउट ऑफ बदतमीजी, आउट ऑफ हार्मिंग अनदर पर्सन, आउट ऑफ बीइंग रूड. यू कैन बी वेरी पोलाइट इन ऑल्सो इन्फोर्सिंग योर बाउंड्रीज एंड देयर इज अ वे टू लर्न थिंग्स. यू नो यू गेट बुक्स ऑन एवरीथिंग नाउ. Alhamdulillah, like I have so many self-help books in the house because healing is not the only thing that can help me. There are so many methods and modalities. हर चीज़ हैबिट्स भी होती हैं. एक तो आपकी प्रोग्रामिंग तो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी जो हैबिट्स होती हैं उनको बदलना, उसको मॉनिटर करना, टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ इज़ की. लाइक द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ look at yourself. Who are you? What do you want? What makes you tick? What angers you? What makes you happy? And you should always sit in a corner and ask yourself, कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या मकसद है, what makes me happy. And I don't think हमारे सोसाइटी में ऐसे सवालों को ज़्यादा हमें सिखाया गया कि अपने आप से पूछा. I'm sure you do that with your son, but you know in our generation we were never told to self-explore. What would you say to people watching at this point in time? That what are the you know, like if I ask you, okay, what are the 3-4 top questions that what gets the journey started?
कहाँ से मैं शुरू करूँ, मुझे समझ में नहीं आता. पहले बाउंड्री बनाऊँ, पहले थेटा हीलिंग ले लूँ, पहले एफर्मेशंस कर लूँ, ग्रेटफुल जर्नल लिख लूँ रात में, योगा करके मेडिटेशन कर लूँ शाम में, या कुछ स्टोन्स पहन लूँ फॉर गुड एनर्जी. में कहाँ जाऊँ, शुरुआत कहाँ करूँ मैं? ये सिर्फ आप अपने बारे में आंसर कर सकते हैं, बिलीव इट और नॉट. इन द मोमेंट what feels light to you, that's the one thing that I tell all my clients, even when they want to come in for a session. Should I come now? Am I ready for my next one? I'm like, what feels light to you? Does it feel difficult and heavy to come to me right now and to come for a session? Then don't do it. You're not ready. You're not in that space where you want to heal through this method. अगर yoga is feeling light to you today कि यार बड़ा मजा आएगा योगा क्लास में और मूड हो रहा है, वो करो. जर्नल करने का दिल कर रहा है, जर्नल करो. लाइक जो आपका दिल कर रहा है उस वक्त के, दिस मेक्स मी फील गुड, दिस मेक्स मी फील लाइट, आई एम नॉट पुशिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट हार्मिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट बीइंग अनकाइंड टू माई सेल्फ. दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू इन द मोमेंट. एंड ऑनेस्टली लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ मोमेंट्स and we need to just look at it in the present moment. What do I need now? And take it from there. But anything, Mariam, that you can say, like there are 2, 3, 4 things that I think everybody should sit down and ask themselves today. अपने आप से ये आज एक सवाल ज़रूर पूछिएगा. और अगर ऐसा कोई सवाल है, to get to know yourself better or to realize where it is that you're going wrong, what could be those 2, 3, 4 things that everybody should ask themselves? कोई सवाल है ऐसे? What would I ask myself? Or is there something that we should ask ourselves? या कौन सी चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिलती है? My favorite question is, what do I want and what do I have? What do I want आपको एक डायरेक्शन देता है कि मेरी परफेक्ट पिक्चर लाइफ में क्या है, और what do I have आपको एक स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड में ले आता है कि वेट अ सेकेंड, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी है, काइंड ऑफ थिंग. एंड व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग द थिंग्स यू ऑलरेडी हैव, वेदर इट्स योर एट्रीब्यूट्स, हु यू आर एज अ पर्सन, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर लव्ड वंस, maybe your dog or your pet, or like a maid that who's really kind to you, takes care of you like a mom, you know, or it's material things also. I love my car, or I love my watch, or I love my, I don't know, I love this lamp in my house because I bought it with so much love, you know, like, because it's, and also yeah, the reason I'm saying this is because people downplay like, oh, material goods में नहीं जाओ, but like, you know, I love my things also. I love my, I have a अपनी एक जगह होती है, because yeah, अपने घर की अहमियत होती है, मेरे घर के एनवायरनमेंट की अहमियत होती है. वो कहते हैं कि मटेरियल थिंग्स भी हमारे ही क्रिएशन है, होता है, हमारा एक क्रिएशन है. हाँ, इसको लिया है क्योंकि हमें पसंद है, हमने इसको बनाया है, ऑर्डर किया है, उसको डिज़ाइन किया है. It's got a part of your energy in it. Yes, it's definitely. got a part of your energy in it, and that is why it becomes a little more worthy of respect. And once you start respecting material things, also आपको उनकी अहमियत का भी थोड़ा सा एहसास हो जाता है. So please, when you start asking questions, start with what do I have, because what do I already have? What am I already made of? Am I a kind person? Am I a loving person? Am I angry? What am I feeling? Like, what am I made of? Start with that. What do I have around me? A state of gratitude will shift your vibration within seconds. And the more you practice something, the more that the more that skill is like honed, and the more you see it around you. The more honestly, you see it around you, the more you practice gratitude. It is true. I'm not saying you don't complain. मैं हालात के बारे में बहुत complain करती हूँ, अपनी सेहत के बारे में भी बहुत करती हूँ complain. लेकिन साथ ही साथ to see life from a lens where you love things, enjoy your little experiences, does make it a little, and you can work on it. A lot of people say it's easier said than done, and it is. But I think practice does help. Practice is the only thing. Yeah. In the longer run, in 5-6 months, you will realize you're starting to get more grateful than complaining, I guess. Is that one way to do it? Like, if you look at practical methods of thinking more positively, you know, what are the ways to do that? Another way of you yourself are your biggest critic most of the time कि मैंने ये सही नहीं किया, because you're coming from a place of, जो आपने पहले बोला था कि जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी वो उनकी अपब्रिंगिंग अलग थी, उन्होंने हमें अलग तरीके से रेज किया है, तो उनकी जो क्रिटिकल वॉइस होती है बचपन की, वो हमारे दिमाग में प्ले कर रही होती है कॉन्स्टेंटली. ये तुमने गलत कर दिया, ये तुमने सही से नहीं किया, ये तो वापस जाके देखो. पेरेंट्स हैं जो कमेंट्स करते हैं. Okay, so we were talking about healing and coming down to कि कौन सी चीज़ें हैं that we can incorporate into our lives to help our healing process, or to remain in the zone where we are aware कि ठीक है, today is a difficult day, we can this too shall pass. Because you see a lot of people जो बिल्कुल हार मान जाते हैं,
या they literally have anxiety and they can't control it, तो एक रोना धोना, और वो हमारे साथ भी होता है. Many things make me very emotional. रोना बहुत आता है और मुझे उससे कोई चीज़ embarrassing नहीं लगती अगर आप रोते हैं. अगर आपको किसी चीज़ के लिए grief feel होता है, या अगर आपको लगता है रोने से आपकी टेंशन थोड़ी सी निकल जाएगी, that's fine too. But keeping yourself sane, and कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी जिनको हम आज incorporate कर सकते हैं कि हमारा कल जो है वो थोड़ा सा आज से बेहतर हो. I also want to comment on कि जो आपने बोला कि रोने के बारे में, रोना is actually a form of release. Unfortunately over time लोगों ने इसको एक form of weakness बना दिया है, but it is actually a strength because when you cry it out, you are releasing that energy from your body. You feel lighter and you've kind of experienced whatever difficulty you are experiencing and you let that emotion out instead of keeping it stored into your body in different places कि मैं नहीं रहूँगा, and then that comes out in physical illness at some point. The more you store inside of you instead of just releasing it through emotion. Mentally आप बहुत चीज़ों को अपने अंदर जो store करते हैं वो आपकी physical illnesses में भी add करता है. It does create a lot of physical illness within you. Yes, definitely. There are advanced courses in Theta healing which I plan on taking as well, in which they show you which part of your body stores which emotion for you. जैसे resentment is a big factor that creates cancer in your body because the more resentful you are towards someone and the more you store that ill feeling inside of you, that's why they say anger and all these things inside of you harms you. So you kind of need to let it out. आपके अंदर से कुछ बुरा निकाल रहा है लेकिन आपकी सेहत पे आपके इफेक्ट करता है. So जब हम कैंसर पेशेंट्स पे भी काम करते हैं, so it's the first place we start to look is what kind of anger, resentment are they holding on inside of themselves, and we kind of tackle that area. तो कितने पाकिस्तानीज़ में होगा resentment, तो हम सब में है, like किसी ना किसी से कुछ ना कुछ गिला शिकवा, resentment. And that's natural. It's natural to feel these things, but it's also very natural to release these things. If you don't release them is where the problem arises, is when you keep it inside of you. Resentment को किस तरीके से release किया जाता है? Theta healing के through is one of the ways. Is one of the ways. Another way is to express yourself. You can have a therapist. You need to talk about it also sometimes. Talking also helps. Like journaling helps to understand your own feelings कि ये शुरू कहाँ से हुई बात, कि क्यों मुझे ये फीलिंग आई अपने अंदर, and to just explore that feeling a little bit further. All it needs is a moment of your undivided attention to start to feel and release things as opposed to not feeling. और जो आपने दूसरा सवाल पूछा था कि ये जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं हम सेल्फ हीलिंग की, सो जो मैंने अपने लिए जर्नी शुरू की थी वो मैंने की थी डिवाइडिंग इट इन माइंड, बॉडी एंड सोल. सो 3 कैटेगरीज बनाए. तो बॉडी के लिए मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड वॉकिंग आउटसाइड इन द स्ट्रीट. एट दैट टाइम जब मुझे सिवियर डिप्रेशन था तो मैंने एक प्लान बनाया था अपने लिए कि अब मैं रूटीन टाइम टेबल ही बना लिया था कि अब मैं क्या करूँगी रोज़. एंड आई वॉज अनएम्प्लॉयड एट द टाइम. आई वॉज एट होम which I made it worse in a new country. I had just moved and I had to figure out something and I had to stick to the plan. And I had someone there, a friend of mine, who used to help me stick to the plan. कि आज तुमने ये किया, did you go out? Support system is insanely important. Like we all need that help. And my parents helped me so much. My siblings helped me. My friends were helping me in their own ways, whoever understood it. So जो मेरा टाइम टेबल था वो था कि हर रोज़ मैं अपने माइंड, बॉडी और सोल के लिए एक चीज़ करूँगी. एक चीज़ रोज़, एक चीज़ के लिए, मतलब कि एक चीज़ फॉर द माइंड, एक चीज़ फॉर द बॉडी, एक चीज़ फॉर द सोल. अब फिज़िकल फॉर्म के लिए जो था वो मुझे वॉकिंग पसंद थी और बाहर समर था और इट्स ब्यूटिफुल देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्लावर्स एंड ग्रीनरी. सो आई यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक एंड बी इन नेचर एंड दैट वुड हेल्प मी अ लॉट. और आई यूज्ड टू गो एंड स्विम. सो आई यूज्ड टू स्वेट इट आउट. I'd have endorphins, like kind of it releases good hormones in your body and stuff. वर्किंग आउट एक किस्म की फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, डांस हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वॉक हो गया, स्विमिंग हो गई. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वो चीज़ करें जो आपको लोग बोल रहे हैं कि जिम जाओ या टेनिस खेलो. लाइक what makes you feel good? If dancing makes you feel good, please go and dance. एनर्जी रिलीज करनी है आपको, थोड़ा सा बॉडी को हिलाना है. द बॉडी इज़ नॉट meant to be still in one place. The body is meant to be active. और सो अपने लिए मैंने स्विमिंग शुरू की और क्या कहते हैं वॉकिंग शुरू की. एंड दैट स्टार्टेड हेल्पिंग मी अ लॉट. फिर उसके बाद जो माइंड है, अब माइंड को भी नरिशमेंट चाहिए, फूड चाहिए. अब आप जो भी चीज़ें पढ़ें, अब अगर आप टीवी देख रहे हैं फॉर एग्जांपल और न्यूज़ पे बुरी चीज़ें आ रही हैं, लाइक फियरफुल चीज़ें आ रही हैं, डिप्रेसिंग चीज़ें आ रही हैं,
I don't watch the news. I know it's horrible. Not all of you can afford to do that because you have to follow what's going on in politics, your businesses flourish, etc. But No, you I can don't also need to do kind of it. streamline it. You can also see कि मैं कितना सब्सक्राइब करती हूँ और कौन से चैनल्स मैं हैं, उसके पास जाती हूँ कौन से चैनल्स मुझे बॉदर कर रहे हैं, उनको देखना बंद कर दें कि अगर आपके ऊपर है मुझे बॉदर करते थे क्योंकि वो चिढ़ते इतना थे और मैं नहीं सुन रही that's great. उनका कॉज जितना भी अच्छा है मैं नहीं सुन रही It's not for you then. अगर if it's not making you feel good, it's not for you. ठीक है तो एक्चुअली सोशल मीडिया बहुत सारे लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं आई थिंक हमारी अपनी पेरेंट्स की जनरेशन इतनी एंजाइटी के साथ मुब्तला है एंड दे डोंट इवन नो हाउ इट वर्क्स बिकॉज एंजाइटी तो हमारे ज़माने में एक टर्मिनोलॉजी आई है कि इसको एंजाइटी है इसको एंजाइटी है अम्मा अब्बा न्यूज़ देख देख के मतलब कि बेहिस हो गए खत्म बट दे जस्ट बिकम लाइक वो वेजिटेबल्स इन फ्रंट ऑफ द काउच कि वो न्यूज़ चैनल बदल नहीं सकते Exactly. I am sitting here, my parents are in Canada and they keep telling me पता है पाकिस्तान में ये हो रहा है. I was like अच्छा I was like मैं तो मुझे देखना भी नहीं है, मुझे प्लीज़ नहीं बताएं बिकॉज फिर आप खौफज़दा हो जाते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं और आप सोचते हैं कि मैं जाऊँ मैं नहीं जाऊँ, रोड पे क्या हो रहा है, कुछ मुझे हो जाएगा. Either you come from a place of love or you come from a place of fear. Which energy are you feeding at the end of the day is what I always bring myself back to bring myself to normal. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे मेरे डिप्रेसिव स्पेल्स वापस आ जाते हैं. मेरे न्यूज़ चैनल नहीं आता लेकिन मुझे एंग्जाइटी होती है. डिप्रेशन के बारे में हमने इतनी बात की है. हमारा डाइट भी एक रोल प्ले करता है इसमें. डेफिनेटली हम जो खाना खा रहे हैं, हमें जो नींद मिलती है एंग्जाइटी की वजह से वो again वापस आती है. Food can also be seen through energy in energy healing. What does the food you take in make you feel like after you've eaten it? अब जब fresh salad और fresh fruits खाते हैं तो एक हल्की अच्छी सी फीलिंग आती है बाद में. जब आप वो बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना खाते हैं या very heavy meats and stuff, you kind of feel very low and lethargic afterwards. So that is a vibration of the food that you're taking in. How does the food make you feel after you've eaten it? So that's a way of looking at food as well. लगता है कि हम इतना पराठा सालन ठूस लेते हैं और जब तक हमें फूड कोमा नहीं होता या हम कुर्सी नहीं छोड़ सकते. उस दिन मैं रेस्टोरेंट गई थी, there was a man just sitting like this. He'd eaten so much कि वो ऐसे बैठे थे और वो आधे घंटे तक तो वो हिल नहीं सके बिकॉज उनका जो खाना था ना वो and I was just like and it's also a way of it makes you feel disgusted with yourself sometimes, you know, like sometimes I go into this mode of eating when I'm feeling low or emotional, so food will like help me feel better. And it's just how your brain is kind of wired. And I'll eat like a big burger and I'll have like a big Coke ki bottle and then I'll sit there and be like, oh, I shouldn't have done that because it made me feel worse. It did not make me feel happy after. In the moment तो मैंने कर लिया कि जो भी MSG वाले मेरे खाने थे और जो high sugar वाले थे. In the moment अपने आप को रोकना भी ना is a practice. It's very difficult. It is, and we're all going through this journey. जब आप कुछ देख रहे होते हैं और आपके मुंह के आगे 3 लोग खा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन practice makes perfect. क्योंकि अब मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके आगे मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन केक खा लूँ लेकिन क्योंकि वो शुगर नहीं खाते उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता. उनका तो मेरे लिए बुरा ना लगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ा, मुझे वाकई में नहीं खाने का दिल कर रहा. My sister-in-law is vegan. ऐसे कैसे हो सकता है? तो मेरी सिस्टर-इन-लॉ जो है वो वीगन है और वो हमारी फैमिली में पहली इंसान है जो वीगन है. और जब वीगन यानी कि डेयरी भी नहीं. हाँ, डेयरी भी नहीं, अपनी जगह गोश्त तो वेजिटेरियन हो जाता है अगर नहीं खाते. चीज़ नहीं, अंडे नहीं, डेयरी भी नहीं, दूध भी नहीं, किसी भी चीज़ में. और पहले हमें बहुत मुश्किल लगता था कि ये कैसे वी यूज्ड टू वरी फॉर हर कि ये कैसे होगा और इनका खाना कैसे बनेगा. कमज़ोर भी तो हो जाएगी यार, ये क्यों कर रही है अपने साथ. बट शी इज़ फिट, शी इज़ हैप्पी विथ हर डाइट एंड यू नो व्हाट, शी मेक्स अमेजिंग vegan food. Like I will eat it and I'll be like, I did not miss the meat in this situation, I did not miss the cheese, the food was amazing. It's just about how you cook it also, right? Yeah. How creative can you get with your new routine? But the baseline for all of this is how much do I care about how I feel? How much do I love myself to do this, to bring this change, to keep practicing this? In general, and then people in the world at large have very little self-love. हम अपने आप को जितना हम अपने आप को beat up करते हैं उतना हमें लगता है कि we deserve this, the life that we have because we're miserable, we're working hard. हम अपनी माँ के लिए sacrifice कर रहे हैं, बाप के लिए कर रहे हैं, तो शौहर के लिए कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए करेंगे. और जब तक आप पिट के आपको नहीं लगेगा कि बस अब ये हो गया तो you know
इफ़ यू सी समबडी इंजॉइंग देयर लाइव्स, उनको ताने भी पड़ते हैं, हाँ तुम बड़ी लेजी, भरे आपको क्या फिक्र ज़िंदगी में। इसी तो सेल्फ टॉक से हमें हटना है, बिकॉज अल्लाह ने आपको बहुत प्यार से बनाया है। यू नो, जैसे आप घर पे बैठ के एक पेंटिंग बनाते हैं और आप सोचते हैं कि वाओ यार आई मेड दिस, एंड यू हैव दैट फीलिंग। नाउ इमेजिन अल्लाह मेड यू लाइक दैट एंड ही सेड दिस इज माई क्रिएशन एंड ही कॉल्ड यू अशरफुल मखलूकात एंड ही इज लाइक दिस इज द बेस्ट ऑफ माई क्रिएशन। सो इमेजिन हाउ मच लव देयर इज, एंड देन rest of the creation is now just crumbling because they're just so stressed and anxious and the best of the mean to each creation other and needs to love themselves again the way God loves you. Like even if you can get like 0.00%, like 1% close to that, you've started that journey of what you were meant to be, what you were meant to do. and I think self love में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मरियम ने भी पहले कहा था, वो आ जाती है कि you need to draw your boundaries। इसमें कोई बदतमीज़ी नहीं है, चाहे आपसे कोई बोले। मुझे पता है कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में बहुत बड़े जो हैं वो बच्चों को कहते हैं हमने तुम्हारे लिए इतना किया और तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। यू नो, ये एक इमोशनल ब्लैकमेल भी इसको कहा जाता है। फिर कहते हैं कि ये एक वेस्टर्न आइडिया है जो हमारे अंदर आ गया है, लेकिन एक्चुअली जितनी माएँ हैं, जितने वालिदैन हैं, सच मुझे देख रहे हैं, I would never want them to be upset by what I'm saying, but there's something called toxic parenting also, and there is something called emotional blackmail जो बच्चों पे पेरेंट्स प्रैक्टिस करते हैं without knowing। और ये मेरे दोस्त के साथ हो चुका है। वो एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में था, लेकिन उनके माँ बाप ने उसको इससे तोड़वाया था क्योंकि लड़की शियानी थी, तो बस वो उसके पीछे पड़ गए और फिर उसकी दोबारा शादी भी हुई। अब वो नाखुश भी है, अलहदी भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है क्योंकि माँ बाप की एक थी ख्वाहिश। ना उसे कि ख्वाहिश माँ बाप की क्यों थी, जब उन्होंने उसके साथ रहना नहीं था या उनकी शादी तो उन्होंने कर ली ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, और फिर ये एक एलिमेंट ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज आ रही हैं, ये कंट्रोल हमारे बच्चों को बहका रहे हैं या किसी और डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। यू नो, दिस काइंड ऑफ नैरेटिव इज काइंड ऑफ सैड बिकॉज इफ यू आर encouraged to marry the person you genuinely love, if you're encouraged to do things that you genuinely love, you are labeled a little as selfish or bad to your parents, or if you need space from your parents, they're like हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें तुमसे स्पेस चाहिए, and you're like please don't know it, you know। ये एक कंट्रोल का एलिमेंट होता है कि आप अपने डर की वजह से अपने बच्चे की ज़िंदगी को आप A to Z डिफ़ाइन करना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चा इस दुनिया में आता है वो आपसे ज़्यादा खुदा से कनेक्टेड है, क्योंकि वो डायरेक्टली अभी वो रूह जो है अभी आई है अल्लाह मियाँ के पास से। वो बिल्कुल वो प्योर लव है, बिल्कुल प्योर है, और उस बच्चे का कनेक्शन खुदा से इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उस बच्चे को आपको बस सिखाना है कि भाई ये जिंदा कैसे रहो आप अपने आप को साफ कैसे रखो। आपको बेसिक, परिंदा भी ये जानते हैं कि मैंने बेसिक स्किल दे दी इसको, अब इसको जीना है, अब इसको उड़ने दो, बिल्कुल सही। लेकिन हम अपने फियर में, अपने कंट्रोल में इतना फंस जाते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भी कंट्रोल करके उनको बताएं कि ऐसे कपड़े पहन के आप जाओ, लाइक कहाँ पढ़ना है, ये क्यों ऐसे, लाइक आई डोंट नो नेल कलर कौन सा लगाना है, आप रेड नहीं लगा सकते, आज आपको ब्राउन लगाना चाहिए। लाइक it's a little ridiculous the amount of control that's going into dictating how another human being will live. They've also grown up in that system themselves. They have, especially and it's just a repeat. And their mothers, being a woman, they always had a very, very defined role. And you know, I don't want to bash that generation either, because they have been through insane trauma themselves. They went through wars, they went through migrating from, at least my parents, migrating from one country to another with just one bag of their clothes or money, and like they've been through proper like next level trauma, and they've tried their best. But for them to say something like हमने तो ये देखा है, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, तुम क्यों depressed हो? That is a bit I frown upon that, because I don't think you can draw on another person's experiences through your own. Okay, depression is a chemical imbalance in the brain. It is not because कोई खुश नहीं है किसी situation में. If I am in depression, आप मुझे सारी अल्लाह की नेमतें दिखा दे, मैं खुश नहीं हो पाऊंगी, बिकॉज केमिकल्स जो मेरे ब्रेन के हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैप्पी हार्मोन्स, तो मैं कैसे उस स्टेट के थ्रू जाऊंगी। ये डिप्रेशन इज नॉट अ स्टेट ऑफ नाशुक्री, इट इज नॉट, डेफिनेटली नॉट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ मेडिकल इशू as much as it is an issue of the soul or the mind or this thing, it's also। और मजाक उड़ाना लोगों को बंद कर देना चाहिए अब, बिकॉज मजाक उड़ाने से आपको शायद एक मोमेंट मिलता हो कि भाई मैंने हंस लिया, लेकिन जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं उनका दिल दुखता है, और दिल दुखाना इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन डू फॉर अनदर पर्सन। काइंडनेस
be kind is so important. It's so important. Kindness towards yourself, kindness towards other people, like wasn't that the point of all of this? ज़बान जो है उससे ज़्यादा डैमेज होता है, हाथों से ज़्यादा, पैरों से ज़्यादा जो है अपनी ज़बान जो तेज़ होती है उससे हर्ट बहुत होते हैं लोग. अब मेरी भी एक डिप्रेशन से पहले जो ज़िंदगी थी ऑनेस्टली वो थी कि मेरे दिमाग में जो भी आए मैं बोल देती थी लोगों को. मुझे लगता था कि मैं बहुत कूल हूँ और मैं व्हेन यू आर ग्रोइंग अप you kind of just adapt to the environment and you do things. पर्सनल अटैक्स तो नहीं हो सकते. And later I realized that wait a second, and I know this is not the right way to think. I said, do you think that because I harmed people with my words that I am feeling that same harm right now? Is that reflecting in me कि ये जो मेरा दिल अभी दुख रहा है, जो मैं जिस चीज़ से गुजर रही हूँ, क्या मैंने किसी और का भी दिल इस तरह दुखाया होगा? तो मेरा एक पूरा पीरियड था जब मैं लोगों को फ़ोन कर करके अपोलोजाइज़ कर रही थी, याद कर करके मैंने आपको क्या बोला था. मेरा भी था. मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया था और मैं काफ़ी रोई थी. मैंने उसको बोला था कि मैं तुमसे आज माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने शायद कभी तुम्हारे बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे तो मैं उनके साथ बैठ के हंसती ज़रूर थी. मुझे आज शर्मिंदगी है कि मैं उन लोगों में से थी जो दूसरे लोगों पे हंसती थी और उनको जानती भी नहीं थी. मुझे माफ़ कर दो बिकॉज आई वाज अ फैसिलिटेटर या इनेबलर या जो भी आप कहते हैं आज के ज़माने में, यू नो. लेकिन ये रियलाइजेशंस आने के लिए आपको अपने साथ बहुत वक्त गुजारना पड़ता है और अपनी खामियों को देख के एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं झूठ बोलता हूँ. अगर मुझे मौका मिलता तो मैं चोरी भी कर लेता. पूछ ले अपने आप से, आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे. या मैंने कभी कभी अपने बिजनेस में किसी के साथ गलत किया है. हम सबको वो शहजादों का एक गाना है ना कि वही शरीफ है जिसे मौका नहीं मिला, ऐसी कुछ है ना. तो कुछ ना कुछ तो है हमारे अंदर जिसकी वजह से हमने लोगों का दिल दुखाया होगा. और वो दुखाना उनको तो अलग बात है, वो आके आप ही को काटता है बात में कहीं ना कहीं अंदर से. लेकिन नेवर ब्लेम योर डिप्रेशन ऑन, क्योंकि तुमने recently some television film star had said that it's because we are not connected to Allah that we get depressed. I think she meant you're not spiritually inclined, and spiritually inclination अगर आपकी होती है, you'd probably look into things medically as well. It's a wholesome sort of experience. Spirituality has helped a lot of us go through the worst times in our lives. So उसको मैं undermine नहीं करना चाहती, but I think a lot of people are like ये तो मेडिकल होता है, अल्लाह से दूरी में क्या डिप्रेशन होती है, और ये तो मेडिकल होता है, डिप्रेशन तो गोरों को भी होता है, उनकी अल्लाह से ना करीबी है ना दूरी है. और you know she came under a lot of flack. आप अल्लाह से आए हैं, ठीक है. अब अल्लाह जो है वो नाम आपने दिया है क्रिएटर को, जो कायनात के जो क्रिएटर हैं. वो दूसरे मुल्क में किसी और ने या दूसरे रिलीजन ने कोई और नाम दिया है. वो एक ही चीज़, वो एक ही खुदा है. आप उसको जिस नाम से पुकारें, आप जिससे बात कर रहे हैं वो एक ही खुदा है, राइट. और अगर आप वहाँ से आए हैं तो आपकी कनेक्शन जब अपने आप से भी टूटती है ना तो अल्लाह से टूट जाती है, बिकॉज आप खुदा के थ्रू आए हैं, उसकी रूह खुदा से बनी है. So that is probably the baseline. That is the truth. There is no denying the truth. There is. अगर आप एथियस्ट भी हैं ना तो आपको ये तो पता है आप कहीं से आए हैं, तो आप अपनी कनेक्शन पे अपने साथ काम करें. जब वो कनेक्शन खुलेगी तो वो खुदा से कनेक्शन भी खुलना शुरू हो जाएगी. जब हम अपने साथ कनेक्ट करना बंद कर देते हैं तो फिर ये सारी इश्यूज़ जो हैं वो माशरे वाली आप एक ओपनिंग दे देते हैं कि भाई आओ मुझे आगे मारो काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज आई डोंट हैव दैट ग्राउंडिंग, आई डोंट हैव दैट सेंटर्डनेस, आई डोंट हैव दैट सपोर्ट. और जाने दो कि उसमें माशरे में कि कोई बात नहीं बेटा सह लो. मुझे याद है कि एक दोस्त का शौहर उसको गालियाँ देता था तो उसकी अम्मा कहती थी चलो मारता तो नहीं है. मैं ये सुन के भी शौक में आ गई थी, लेकिन उनके लिए वो ठीक था, बुरा नहीं है, मारता नहीं है. अगर वो बच्चे की डेफिनेशन ये है कि हाथ नहीं उठाया उसने, ये अच्छा आदमी है. Do you realize how sad? अल्लाह का तोहफा दिया है हमें. Sad that is that she feels that way about herself. Yeah, she thinks she's worth that. She's like अगर मुझे कोई मारे नहीं इतना काफ़ी है, because her life must be that sad. She must have gone through so much trauma that she thinks अच्छा ये नहीं हो रहा तो एटलीस्ट चलो थोड़ा बच गए. यानी जिंदगी इतनी ख़राब थी, अब हमें क्या करना है, हमें ज़िंदगी को फ्लरिश करना है. क्या हुआ, तुम पे चीट तो नहीं किया, मतलब एक से I mean this yeah. I think लोगों की बातें सुनना बंद कर दें आप, और अब अपने आप से कनेक्ट करें, क्योंकि आपकी जब कनेक्शन अपने आप से खुलेगी ना तो वो खुदा से खुलेगी और आपको खुद इन्फॉर्मेशन आएगा कि मुझे क्या करना है. मेरी इंस्टिंक्ट मुझे बताएगी, मेरी गट मुझे बताएगी. Full circle to that quote of Hazrat Ali or Imam Ali, like you said as well, that your sickness is within you and your healing is within you. And your healing is within you.
and that is mental, physical and emotional, your soul, your mind and your body. What did you do for your soul? हम तो कहाँ से कहाँ चले गए? ओके सो जब उस वक्त मैंने थेटा हीलिंग बस सीखी ही थी और वो पहली मॉडलिटी थी आउट ऑफ द मल्टीपल. बेसिकली यू क्लोज योर आइज. You have a process of creating that connection within yourself, going into the theta state and feeling like you are connecting, observing and visualizing that you are connecting to a higher power also. So that is the meditative space you bring yourself to, and then you start asking questions, and when you practice you receive answers. Believe it or not, when I have a client in front of me, they will tell you themselves that I can read things about them because I'm connected to that source energy which is sending me that information, and I can tell them what they're feeling, what has happened to them in their childhood, and I can just pick up on images. अब सब तो नहीं, अभी लिखा हुआ नहीं आ जाता मेरे पास, लेकिन जब मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उनसे पूछती हूँ पहले कि सही है या गलत, ये नज़र आ रही है चीज़ मुझे, हम यहाँ से काम करें, तो मुझे बताते हैं कि हाँ ये ऐसा इवेंट हुआ था जिसकी आप बात कर रही हैं, या मुझे कहते हैं कि आपको कैसे पता चला, और पहले तो मैं खुद डर जाती थी कि ये क्यों मुझे कैसे पता चला, यू नो, बट प्रैक्टिस करते करते आपको रियलाइज़ होता है कि ये कोई भी ये स्किल अडॉप्ट कर सकता है. अब अगर कोई भी ऐसी स्किल आप उठाएं और उसको प्रैक्टिस करते रहें, वी ऑल हैव द कैपेसिटी टू कनेक्ट विद दिस एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सोर्स. बुद्धा तो ये कहता था कि कोई भी बुद्धा बन सकता है, इसलिए मैं एग्जैक्टली मुझे ना बुद्धा बनाना ना बुद्धा मानना, क्योंकि सबके अंदर ये है, सबके अंदर ये सलाहियत है. बेसिकली दैट्स व्हाट यू वुड से कि तुम अपना ढूंढो भाई, निकलो और करो. मैंने ऐसे किया है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये ऑब्वियसली अब सबके पास ये मॉडलिटी नहीं होती है जो मैं करती थी उस वक्त. सो आई एम मुस्लिम, सो आई अंडरस्टूड कि कुरान की आयतें से मुझे सुकून मिलता था, तो कुरान मैं चलाती थी और मैं पेंट करती थी बैठकर, तो वो मैं सुनती जाती थी और वो मुझे मेरे सोल को जैसे सूद करता था. सो आई यूज्ड टू फील कामर, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे लिए है. तो आपका अपने फेथ का इस्तेमाल करें अपनी हीलिंग के लिए. अल्लाह मियाँ है, इमेजेस सुन रहे हैं, मैं कुरान में यकीन रखती हूँ, तो जब मैं कुरान को सुनूंगी तो मैं हील हो रही हूँ साथ साथ. हीलिंग भी आपकी होगी. कहते हैं सूरह रहमान सुनने से, 3 दफ़ा दिन में सूरह यासीन सुनने से. Both are my favorite like surahs because they make me feel so wonderful and connected, and you know after सुकून मिलता है. सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि मेडिटेशन और सूरह कोई अलग चीज़ नहीं है. लेकिन मैं तो सूरह रहमान लगा के भी डीप ब्रीदिंग कर लेती हूँ, आंखें बंद करके उसको सुनती हूँ 15 मिनट 20 मिनट जितना लंबा वो चलता है, and all these things. So ठीक है, you did that as well. I did that. So whatever you feel is for your soul, that makes you feel good on the inside, you start following that. It could be yoga. Yoga, by the way, is a full body, mind, soul experience. So it brings in everything into that realm. If you find a traditional yoga teacher, of course, not the जो नई वाली जो power yoga ये सारी चीज़ें हैं, वो तो बस physical form पे kind of ज़्यादा work करती हैं. weight loss हो गया, but हाँ. कोई वो जो होती हैं जो breath work पे काम करती हैं, जो meditation में काम करती हैं, जो आपको सिखाती हैं कि okay, now this is how you silence your mind. You are kind to your thoughts that are coming in, and then you let them pass and you hold the stillness again. ये इस type की meditation, that is where do you see the future of healing or self-healing? Because जितनी technology आगे बढ़ रही है उतना हमें थेटा के बारे में पता चल रहा है, तो रेकी के बारे में पता चल रहा है, तो there's so many ways to heal. कोई कहता है एक्यूपंक्चर कराओ, जामा आपके लिए बहुत अच्छा है, spiritual therapy भी आपकी होती है. But tensions are rising. People are more unhappy than ever, or are they not? Maybe not. It's where you're looking. I see a mass awakening around the world. I see so many more people who are speaking my language, and a language that I've learnt very recently, you know, like over the past 8 years. आप भी ऐसे बात कर रहे हैं, पहले तो ये words हम use ही नहीं करते थे, तो ये सबके realm of awareness में आ रही है और सब और aware होते जा रहे हैं. So the point is, आपका तवज्जो किस तरफ जा रहा है, where focus goes, energy flows, and that is what you cultivate in your environment for yourself. Okay, so अब जाते जाते वक्त का पता ही नहीं चला, and I was very worried about, not very worried about this episode. I knew कि I know you and we have a good relationship, तो I knew कि conversation तो हो जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं था कि इतनी चीज़ें हैं बात करने के लिए when it comes down to real healing and stuff. I hope कि आप लोगों को इस सेशन से थोड़ा फ़ायदा हो, हमारी तरफ से भी थोड़ी सी अवेयरनेस मिली हो कि किस तरीके से हम इन मुश्किल वक्त में अपनी ज़िंदगी को मनूवर कर सकते हैं. How we can achieve just a little bit of semblance in this life that's so chaotic otherwise. Mariam, thank you so much. Anything that you want to part with, any wisdom, words of wisdom जिसे हम कहते हैं? I think I do. I think the message I want to send everyone today is
stop looking for answers in others, in your environment, and start seeking for those answers within yourself, because you are the best of creation and you have the ability to connect and receive answers which are for you. Yeah, that's so true. Knowing yourself is knowing God. Yes, definitely is. If you know yourself, then many of your problems will just go away. And then Mariam can facilitate you to feel even better. Very good. Start the journey today and tell us how you like this session. Comment section mein zarur batayega ki if we should have more talk on this. If there are any topics that you think we should touch upon, you can always write in. Bell, ting, like, subscribe, connect with us, form this community, and inshallah we'll come back with a lot more. Thank you, Mariam. Bye.